Assalamu alaikum. As we know that every computer program consists of three components. Every C++ program consists of three parts: preprocessor directive, main function, and body of the main function. The preprocessor directive contains header files. What does it mean? Header file क्या है? द बिल्ट इन फंक्शन जिसको हम कॉल करके अपना काम करवाते हैं वो दरअसल हेडर फाइल में मौजूद होते हैं। इसके डिफिनीशंस हेडर फाइल में मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें वो स्क्वायर रूट math.h हेडर फाइल में मौजूद होता है। सी इन सी आउट ये बिल्ट इन फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये दरअसल iostream.h हेडर फाइल में मौजूद है। इनके डिफिनीशन मौजूद है। तो जब भी आप बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में। To use any built-in function in C++ program, the header file contain in its definition. किसकी definition? Built-in function की definition must be included in program using #include. This is the preprocessor directive. Preprocessor directive is used to include header file so that you can use built-in function. The definition of built-in functions are in header files. These files extension .h and are included at the top of every C++ program. तो ये जो हैश इंक्लूड है बिल्कुल प्रोग्राम के टॉप में ये मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ क्लियर स्क्रीन इज़ नीडेड इन C++ प्रोग्राम, ये स्क्रीन को क्लियर करता है, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है, साफ करता है। देन conio.h हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड because the definition of clear screen for clear screen is written in conio.h header file. इसकी definition कहाँ पे मौजूद है? conio.h header file में। syntax क्या है? include conio.h, include iostream.h, math.h. अब math.h क्या है? ये is used in the program the compiler locate and read all the declaration from a header file iostream. ठीक है, तो ये था आपके पास हेडर फाइल। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।